More than 9 decades of serving the nation. Central Board of Irrigation and Power. Going to discuss this about the new and emerging this technology in power transmission and distribution sector that are currently being adopted in this field. So, how was your visit to Dadri? So very nice visit, sir. We came to know about the whole working of that power grid Dadri plant and how the SCADA operates. Actually, what are the triggers and what are the alarms out there, and what was getting logged and what was not getting logged. Okay. So you have visited NTPC also, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. NTPC thermal or Thermal gas? and gas also. Okay, both plants. Yes, sir. Both. Okay. Okay. So we will start this session. So actually, this session is all about what is going to be the new things and what is currently under research and development stage. I was told to ask a session on the new and emerging technologies and automation in power transmission and distribution sector. So I have tried to put up those things which will surely be very useful to you in the near future and in the long term also, because these things are still under R&D stage and being adopted in power grid as a pilot projects at a substation or at a particular location. But in the future, they are going to be you are going to listen them more often. So the future is this basically the next thing. So let me start here. Like, how is the yesterday's power grid or yesterday's? It's not about that company, but it's a the network of transmission line, the grid as a whole. Okay, na? So the pre-transition and post-transition I have mentioned here. The new grid, the future grid, is going to be decentralized. It's a D3, D cube, decentralized, decarbonized, and digitized. My voice is audible, na? Proper, na? Yes, sir. Actually, there is some issue in connectivity today. So, okay. So, you can see here the part of a transmission grid. Its operation, generation, the grid as a whole, its segment, transmission, distribution, and now the consumer, very important one. It has always been an important one, but now it has the power to influence this directly. Now the consumer has the power directly to influence all these things that are there. So we will go one by one. Where, yeah. The storage is not a part of it. This D3. Yes, it's there in this decarbonize. It is there. Okay. Okay, na? It is there. All these things we will cover. Then you will come to know. So this consumer is affecting all these things. Earlier it was not affecting that much. आपको अगर light आ रही है आपके यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो आप you cannot do anything. So you were earlier passive. How you were passive and how you are active now, we will see in these presentations. So very briefly, I will say start from here, operation. So what do you understand by grid operation? When you will see the all India map of power of the transmission line, and as a operator as a whole grid, not a single Dadri station operator, it's the operation of the complete network. Then what are the changes? The earlier one was human based. In the complete grid, what a operator do? It manages demand and supply. Broadly, it manages demand and supply network. Like for a northern region grid, you have 7 states: UP, Punjab, Haryana, Himachal, Rajasthan, the northern one, J&K. So all these states has their demand
and you have central sector generation as well as state sector generation. So you have to manage that generation with the demand of the states, demand of the consumer. So earlier operation was human based. You have to make call to thermal as a operator sitting at a regional dispatch center. Let us say you have to make call for variation of generation. Suppose you have given Dadri thermal plant. What is the capacity? It's 200 into 4 and 490 into 2. Okay, na? Yes, So sir. So thermal power plant 490 megawatt is the rated capacity. For that day, that plant, let us say, has given its declared capability. Every day, a plant gives its DC. It is called declared capability. For the next day. For the next day, out of 490, based on the coal and other factor, availability of machine, availability of auxiliary system, it has given its declared capability as 450 megawatt, let us say, for the next day. Sir, when will they declare? Like in the morning itself? Like what would be the No. time period of declaring it? No, they have to declare a day before. A day before. Yeah, a day before. They have to declare their capacity. It is called declared capacity. So they have to declare that tomorrow I can from 12 o'clock. So they have to give a day before the next that day. They will declare their capability. So let us say for a unit 490 megawatt, they have given its DC declared capability as 450 megawatt for the next day. But operator, now the machine is running at 450 megawatt. Actually, there is a variation in the generation because of auxiliary losses and on bar capacity. So machine is generating for 20 megawatt. Or let us say it has declared its capacity as 450 megawatt and state J&K has asked only for 430 megawatt. So that is called scheduled energy. So operator will schedule that energy. So all these declared capability, scheduled energy, actual bar, all these were human waste. आपको पहले फोन करके पूछना है कि आपको कल को कितना डीसी आप डिक्लेयर कर सकते हैं. आप उसने बताएगा कि इतना कर सकते हैं. फिर वो एक बड़े बड़े एक्सेल सीट में he will run that macro in that Excel. उसके बेसिस पे वो दे. Sir, can you stop moving the cursor? That there is a lag and all the screen is filled with cursors. Like you put it any side. Okay. Okay. Actually, some network issues there today. I'm not there in office. So now it is okay. Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. So I was telling that how human-based behavior of the grid was. किस तरीके से human interference था उसमें. So always human has the tendency to make mistakes, है ना. मतलब वो तो होगा ही. Human है. Otherwise you have to do automation, है ना. अगर automation है तो error के chance बहुत negligible हैं. So human-based things are generally prone to errors. But now it's a machine-based operation. It is currently underway. Not completely machine-based, but most of the softwares has come that will automatically decide कि दादरी थर्मल ने 450 मेगावाट कल का डीसी दिया है and states those are entitled to get Dadri thermal generation. It is pre-decided by ministry. So those states who has the entitlement of getting the power of Dadri thermal plant, how much power actually they can get for that day, because entitlement is based on the actual capacity. Entitlement जो हमारा होगा वो 490 मेगावाट पे होगा, है ना. I am telling only just an example. Okay, sir. So yeah, so on that basis, so it's machine based now. So from human waste, it has gone to machine waste. Not only scheduled and not only work wise, but I will tell that machine wise also, means equipment wise also. Like you have AGC, automatic generation control. So from the operator itself, he can give command to Dadri thermal plant. वो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल कर सकता है वहां से बैठा हुआ, फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, फ्रॉम मानेसर. A question was there that like you have been allotted a particular demand, like suppose for Dadri 200 megawatts is allotted and you cannot exceed it in any way. Yeah, we cannot exceed beyond DC.
declared capability. And sir, somehow it happens, then you will be penalized or something, some kind of fine would be there. Yeah, actually what happens, suppose a generation plant has rated capacity of 490 megawatt. For that particular day, it has given 450 megawatt as its declared capacity. Now, operator has given schedule of completely 450 megawatt to make it run, because every state has asked its complete schedule. You are getting how things happen. कैसे होता है कि सबसे पहले पावर प्लांट बताता है कि मेरी 490 मेगावाट की मशीन है, तो मैं आज 450 मेगावाट जनरेट कर सकता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी है डिक्लेयर। उसके बाद क्या होगा कि सारे स्टेट्स जिनको पावर चाहिए, जिनका 490 मेगावाट में एंटाइटलमेंट था, जो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था जब प्लांट बना था, एट दैट टाइम इट इज डिसाइडेड, ओके ना। सो लेट अस से 4 स्टेट्स हैज शेयर इन दादरी थर्मल प्लांट. Actually, UP and Delhi has share in Dadri thermal plant. Delhi has share of 80% and 10 to 15% I think has Uttar Pradesh, UP. Actually, okay. So these two states, let us say, has share in Dadri thermal plant. Now Delhi is saying that Dadri thermal power is very costly. So today I am not going to take it because I have less load today and I have met my demand from somewhere else. Okay ना? So हाँ, सो क्या होगा कि 450 में से 80% शेयर, यानी कि लेटर से 320 के आसपास अगर उसका शेयर था दिल्ली का, और उसने बोला है कि नहीं आज मेरी 200 मेगावाट की डिमांड है, मुझे लगता है कि मैं दादरी से सिर्फ 200 मेगावाट में चला लूंगा, है ना. सो लेट अस से ही हैज शेड्यूल्ड, इट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड एनर्जी, है ना. दीज आर द टर्म्स दैट यू शुड नो. डीसी शेड्यूल्ड एनर्जी इज एसई, है ना. सो ऑपरेटर विल शेड्यूल दैट एनर्जी, सो 200 प्लस 100. And UP has asked, let us say 100 only. So 300 megawatt is scheduled energy. So plant will run on 300 megawatt only, है ना. प्लांट ने अपनी डिक्लेयर कर रखी है 450 मेगावाट, लेकिन प्लांट 450 पे नहीं चलेगा, प्लांट चलेगा 300 मेगा, या शेड्यूल्ड भी चलेगा. हाँ, क्या होता है. लेकिन सर उसमें फिर उसके पास वो होगा ना, अगर शेड्यूल से वो ऊपर बढ़ जाए तो फिर वो डिमांड कैपेसिटी तक जा सकते हैं. हाँ, वो उससे ऊपर 300 से 450 मेगावाट तक जा सकता है. But he himself cannot decide. The plant doesn't have power. Operator has the power to decide. Let us say operator see that overall in the transmission in the overall grid, let us say the frequency is 49.97 or frequency is low. That means demand is high. है ना? If demand is high, then more generation has to be pumped up. Then operator has the power to say that you should generate not 300. He will give him the next revised schedule of 350 megawatt. So he will generate 350 megawatt. So if he will generate without operator consent, so he will be penalized. Plant will be penalized. Okay ना? 300 से 350 पे अगर वो generate करेगा, so he may have penalty अगर frequency ज्यादा है तो. We have a deviation settlement mechanism. आपकी कोई रेगुलेटरी इस पे अभी, यू हैव एनी सेशन ऑन रेगुलेटरी सिस्टम इन इलेक्ट्रिसिटी लाइक? नो सर, वी वुड बी विजिटिंग द मानेसर वन टुमारो. ओके, नो, मानेसर इज एक्चुअली देयर इज है ना, देयर इज सर सीआरसी एंड सीआरसी. या सीआरसी ना. यस, यू हैव अ क्लास. No sir, we have no idea about that. No sir, actually the CERC launched a new code. Like on 29th of May, they have launched the new guidelines. We were going through those. Okay. So yeah, so that things na, in power sector, what is important? One thing is this equipment related, like the transmission. You have to go to breaker, CT, CVT, HVDC, है ना. जैसे आपने प्लांट में विजिट किया, तो what plant people, maintenance people, what they do? They have to look after the asset. One is the asset part. Another one is this regulatory part. It is also very interesting thing, है ना. ये अपने आप में इसका अलग है. How the new, like Indian electricity grid code is there ना, IEGC. Yes sir. So it is the Bible, है ना. How to run this operation, generation, all these things, how to run. Okay ना. So I was telling you कि if there is a deviation settlement mechanism, तो अगर 300 का उसको शेड्यूल्ड एनर्जी है एंड ही इज जनरेटिंग 320 मेगावाट, तो उसको क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेट अस से फ्रीक्वेंसी इज 49.95,
है ना, और एंड ही इज जनरेटिंग एक्स्ट्रा, देन ही विल बी रिवार्डेड, उसको पैसा मिलेगा, है ना। तो एक मैकेनिज्म बनी हुई है, डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसके कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, मतलब काफी टाइम से बनी हुई है। तो हर बार इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है 49.99 से 50.02, उसको हर बार बहुत नैरो कर दिया जाता है। तो इस यानी कि 49.99 से अगर नीचे होगी फ्रीक्वेंसी, और अगर जनरेटर का शेड्यूल्ड एनर्जी 300 मेगावाट है, और वो किसी वजह से 289 जनरेट कर रहा है या 290 जनरेट कर रहा है, तो फॉर 10 मेगावाट ही हैज टू पे द पेनल्टी, है ना। तो ओके ना। Yes, sir. So yeah, so all these things. So now what happens? There is an installation of automatic generation control in some plant, like in Dadri plant. It is the first plant in India to have automatic generation control installation. So a team from POSOCO, a team from this your CA, these people has visited Dadri plant, and they have seen the automatic generation installation, automatic generation control from the POSOCO, from the operator. तो वहां से क्या है कि अगर किसी वजह से आपका जनरेशन लेट अस से 300 में, यू हैव ए, ही हैज डिक्लेयर्ड द कैपेसिटी फॉर 50 मेगावाट, है ना। तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि ए पावर प्लांट जनरली डिक्लेयर्ड इट्स कैपेसिटी टू हाई लेवल टू अर्न द टैरिफ, है ना। उसका अगर कोई ऑक्सिलरी सिस्टम आउट है और वो देखेगा कि आज तो ग्रिड में बारिश पड़ गई, तो उसको लगता है कि वो डिमांड हो सकता है आज तो कमी होगी, तो डीसी में जो है 450 की बजाय 455 दे देता हूँ। तो 450 तो वैसे ही नहीं चलाएगा, तो आई विल अर्न सम मनी, है ना। Yes, तो sir. या तो फाइव का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। हाँ 5 मेगावाट का उसको प्रॉफिट हो जाएगा बाय डिक्लेयरिंग इट्स कैपेसिटी हाई। तो ये होता है, मतलब दिस इज द एक्चुअल थिंग्स दैट हैपन। तो इसकी वजह से क्या है, एंड फॉर मोर कंट्रोल ऑल्सो, नॉट फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट फ्रॉम सिस्टम इम्प्रूवमेंट एंड ओवरऑल ग्रिड परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट हैपेंस इज कि उन्होंने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लगा दिया, है ना, इंस्टॉल कर दिया दादरी थर्मल में। तो अगर दादरी थर्मल ने अपनी 450 मेगावाट दी है, तो अब उसको है, अब उस पावर प्लांट को ये लगेगा कि ऑपरेटर कैन आल्सो इंक्रीज द पावर फ्रॉम देयर, और अगर उसकी मशीन की कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तो देन मशीन विल ट्रिप एंड इट विल ऑटोमेटिकली ह्यूज लॉस टू हिम। So this figure needs to be decided like real capacity है भी या नहीं, अगर करेंगे तो हाँ फिर वो पीछे से ऑन कर देंगे और हमारा पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए कि ग्रिड में फ्रीक्वेंसी अगर कम है, तो और ऑपरेटर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि ऑपरेटर बार बार फोन करता है ना, कि बढ़ा लो बढ़ा लो, थोड़ा और बढ़ा लो, आपकी डीसी, मतलब दीज आर रियल प्रॉब्लम, है ना। जनरेशन कहेगा नहीं सर मेरा तो पूरा ऑन बार पे कमा रहा है क्योंकि लॉस है, तो मैं और नहीं बढ़ा सकता। तो फॉर मेंटेनिंग सिस्टम फ्रीक्वेंसी, नेट लाइन इंटरचेंजेस, है ना, ऑप्टिमल जनरेशन लेवल, मींस लाइक ऑप्टिमल जनरेशन लेवल जो है वो क्लोज टू शेड्यूल्ड लेवल रहे, है ना। ओजीएल जो है, ऑप्टिमल जनरेशन जो लेवल है, वो शेड्यूल्ड लेवल, शेड्यूल्ड वैल्यू के आसपास रहे, तो उन सब के लिए दे हैव इंस्टॉल्ड ए ओजीसी। तो फ्रॉम ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दैट it's a machine based, it's automation, basically machine based thing. So it has come as a boon to power overall healthiness of this power system. एक होता है SPS, system protection scheme it is called, है ना, system protection scheme. You have any idea, you have listened it, this word? क्या होता है इसमें कि let us say रिहन दादरी is there, है ना। तो रिहन दादरी में कितना फ्लो चल रहा था when you were there? It is the रिहन दादरी HVDC 260 and 217 units. I am saying in रिहन दादरी HVDC is the capacity of 1500 megawatt. या इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है, 1500 मेगावाट। तो लेट अस से इट इज रनिंग ऑन 1200 मेगावाट, है ना। फ्रॉम रिहन टू दादरी इट इज कैरिंग 1200 megawatt of power. Now if this line suddenly get tripped, अगर रिहन दादरी दोनों बाइपोल अगर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाते हैं, then what do you think what will happen in the overall transmission grid? There will be congestion on the other lines, one thing, है ना, and yeah frequency will get down, है ना। एक्चुअली क्या है, ग्रिड पूरा इंटरकनेक्टेड है आपके, है ना। एक ऑल इंडिया मैप है मेरे पास, अगर आपको ये आपने देखा होगा कभी। बाकी जो एग्जिस्टिंग लाइन रहेगी एसी की, उनके ऊपर पावर स्ट्रेस रहेगा। हाँ, उनके ऊपर जो है पावर शिफ्ट हो जाएगा।
बट स्टिल बिकॉज वी हैव रिहन सिंगरौली कॉम्प्लेक्स में क्या है कि पावर बहुत ज्यादा है ना, 10,000 ऑफ मेगावाट इज देयर इन दैट कॉम्प्लेक्स, है ना। आपका रिहंद का पावर प्लांट है, यू हैव सिंगरौली पावर प्लांट, Annapara is there, Lanco plant is there, private player are also there. So when such a major line trip, let us say Rihan-Dadri trip, then surely there will be, you have to take action in the grid, क्योंकि आपकी जो contingency n-1 contingency should always be there, है ना, -1 -2, अभी तो और भी ज्यादा की बात हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या है, सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम SPS यू हैव टू इंस्टॉल। तो ये है, देखिए, है ना, ये अभी लेटेस्ट ही है। अच्छा, दिसंबर 2018 तक का है अपडेटेड अप टू। तो क्या है कि इसमें एक्चुअली दिखाई नहीं देगा, है ना। ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करते समय कॉन्टिजेंसी को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं ना, जैसे अगर कोई एक लाइन आउट हो गई तो भी हमारा सिस्टम हेल्दी रहे। हाँ, कंटिजेंसी को हम लेके चलते हैं, लेकिन अभी भी ग्रिड में क्या है, हमारे बहुत सारे पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे हैं अभी भी जहां पे हमको कंटिजेंसी मतलब काफी सोच समझ के चलना पड़ता है। व्हेन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड कैरिंग हेवीली लोडेड लाइन, है ना। In 2012-13 the major grid disturbance has happened, है ना, you might have listened. तो 2013 में पूरा ब्लैकआउट हो गया था, है ना। 12 हाँ, 12-13 या 12 में, June of 12-13 में। हाँ, तो so you have to take action basically. So for that SPS scheme is installed, system protection scheme is installed. What it do कि जैसे ये रिहन से दादरी की लाइन है, ये एक्चुअली इसमें विजिबल नहीं है, जस्ट आई वाज ट्राइंग टू शो यू द होल नेटवर्क, देयर इज नथिंग एल्स। सो लेट अस से रिहन से अगर दादरी की जो लाइन ये ट्रिप हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू शेड द लोड। तो आपको क्या है कि DTPCs आर इंस्टॉल्ड, डिजिटल टेली प्रोटेक्शन कपलर्स आर इंस्टॉल्ड इन द ग्रिड at various locations that will automatically trip the load, है ना। 1000 मेगावाट मान लीजिए जनरेशन लॉस होता है, तो 1000 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग पंजाब जितने भी हमारे नोड्स बने हुए हैं ग्रिड में, है ना, इसका एक पूरा एक अपने आप में पूरा वो है कि जहां जहां जितने भी हमारे पूरी स्टडी होती है कि कितनी जगह पे कितना जनरली लोड लाइन पे चलता है और आपको कहां पे कट करना है, वेन एवर ए करस्पॉन्डिंग ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप, इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप which is carrying a load from bulk power center to major load center, है ना। दादरी is the major load center nearby Delhi. So how much is that? जिस लाइन पे कॉन्टिजेंसी आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना पावर रहेगा उसको वो आउट कर देगा। हाँ, कहाँ पे आउट करेगा? एट द लोड सेंटर्स, है ना, या एट 132 kV lines, at 220 kV lines. So command is being sent from Dadri. There is a LDC room, if you have seen, load dispatch and communication room there, near the transformer. So from that room, in that room, digital protection couplers are installed. So that DTPC will send the command to load and DTPC. तो यहाँ से कमांड जैसे हरियाणा जा रही है, राजस्थान में जा रही है ना, उस प्रोटेक्शन कपलर के थ्रू। So corresponding load should get shed. So the grid basically it's a machine based thing. अगर आपकी एक लाइन ट्रिप होगी तो you have such schemes in the grid. और ये SPS जो है ये अब कई जगह इंप्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे। मतलब इसका इतना एडवांटेज हुआ है कि जैसे एक अभी आया था कि 5 मिनट्स के लिए लाइट ऑफ करना था मेरे ख्याल से, 5 या 10 मिनट्स के लिए। हाँ इन्होंने ना। तो इन दैट टाइम व्हाट हैज हैपेंड, लाइक सच सिचुएशन अकर, है ना, ऐसी ग्रिड में कई सिचुएशन आती हैं व्हेन यू ऑपरेट इट। तो आपको आपके सिस्टम क्या है, ऑटोमेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, एक लाइन थी 132 kV चांबा से ये JNK के लिए कोई लाइन जा रही थी, तो उसको बार बार वहां पे फोन करना पड़ता था JNK में, है ना। तो वो क्या बोलते थे, सर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर यू हैव सम प्रॉब्लम, है ना, तो आपकी ये हो सकता है, तो अभी हम कर रहे हैं, उसको आउट कर रहे हैं। सो मतलब थोड़ा टाइम लगता था। ऐसे यूपी में होता था, है ना, कई सारे स्टेट में उनके, क्योंकि एट स्टेट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल दे कैन नॉट इमीडिएटली ट्रिप ए लाइन ऑल्सो, है ना। ऑपरेटर वहां से फोन करके बोलेगा कि सर आप लाइन को ट्रिप कर दो, इस वाली को लोड मेरे को कम करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इमीडिएट एक्शन हो भी नहीं पाएगा। हाँ, इमीडिएट हो भी नहीं पाएगा, है। समटाइम क्या होता है कि जैसे हमको लगता है कि किसी स्टेट का लोड लेट अस से इट इज इंक्रीजिंग,
suppose Delhi has a total demand of 6,000 megawatt, let us say, on an average, है ना? अभी शायद पीक तो मेरे ख्याल से 7,000 भी गया था, पर on an average projected as 8,000, sir. Nearly 8,000. हाँ 8,000. It will be at the June or July in the mid. That 8,000 would be the target. हाँ, तो वो projected basically 8,000 है. So let us say it has its average load is 6,000 in winter summer season, है ना? तो 6,000 megawatt का one fourth of the power is being carried through Rihan-Dadri link, 1,500 megawatt, है ना? Although grid is connected, but being an important line, you have to take action. Similarly, जो interconnected line होती है ना? Like ग्वालियर से आगरा की एक लाइन है ना, आगरा ग्वालियर in MP UP, है ना, the line connecting north grid to the west grid. So that line was the major reason for tripping of the whole grid in 2012-13, है ना. 12 में जो reason था उसका, वो that was the reason कि वो आगरा ग्वालियर line got tripped and the whole thing was basically, so you have to take action. So it's a machine based thing. And everything is happening in real time. Everything should happen in real time. You have to achieve that. Real time में ही चीजें हो जाएं, है ना? Real time is very important. जो है at present, immediate action should be there. Similarly, the forecast dependent, है ना? Old grid was forecast dependent. Weather forecast, like in from past 4 to 5 days. Am I audible, na? Yes, Yes, sir. Yeah, okay. Like from last 4 or 5 days, what is happening? The Rajasthan, most of the electricity network of power grid and other also, it is out. Why? Because of there is a severe wind storm is there, है ना? the So line has collapsed or something catastrophic has happened with the Rajasthan. no, it is because of this wind storm, Okay, sir. है ना? हाँ, wind storm की वजह से कुछ asset there is the construction में भी बहुत इफेक्ट हुआ है, और जो asset थे, है ना, कोई लाइन वगैरह जंपर टूट गया किसी का, है ना, कोई लाइन जो है वो कोई ट्रांसमिशन का टावर ढह गया, इस तरीके से lot of the problem is there. So most of the network is out. So Sir, actually, sir, so- we had doubts from that HVDC visit, and if you can put light on that, like we would be sharing the screen of that control room of the HVDC Dadri, and we had some doubts. If you can clear those doubts, yeah, you can. sir, I would be sharing the Yeah. screen. You could see the photo that we have taken. Yeah, Sir, is this visible to you? yeah, visible. This is Sir, Yeah, like here it is written that 1,000 megawatt and then it is 978. So, like 1,000 is the Current demand. like DC, like demand capacity. yeah. Actually, what is you are seeing this HVDC link, है ना? So Yes. on the left hand side you have rectifier, and on the Yes, right sir. hand side you have inverter, है ना? Yes, So sir. for a HVDC link, if its capacity is 1,500 megawatt, then first thing is the operator decides, है ना? The operator decides, the grid operator, है ना? The complete who is looking the complete network. So he will give code to manager for changing for how much power flow you have to put it. कि रेक्टिफायर जो है आपका वो कितनी पावर जनरेट, कितनी पावर कन्वर्ट करेगा, उसका कोड वहां से आएगा, है ना? तो 1,000 मेगावाट इज द कोड provided by the grid operator to rectifier station Rihan Yes, sir. and Dadri that you have to put 1,000 megawatt of power, है ना? तो 1,000 megawatt क्या है, वो रेक्टिफायर पे है. And 978 है as the inverter end. हाँ, 97 out of 1,000 megawatt after transmission line losses you are receiving 978 megawatt power at Dadri. Yes, sir. Yeah. So always this power flow, he will tell you like you have to do 1,000, you have to do 1,100, 1,200, 1,500. How he decides it? It is based on the requirement, है ना? It is based on if you can see. अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जो मैंने ऑल इंडिया मैप जैसे दिखाया था अभी. तो लेट अस से